हेलो एंड वेलकम टू ब्ला यूएक्स एंड इस पॉडकास्ट पे हम बात करते हैं अबाउट हमारे एक्सपीरियंसेस इन द यूएक्स इंडस्ट्री, जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं और हम कैसे उसको इधर सॉल्व करते हैं या फिर उसके बारे में बस बैठ के बातें करते हैं और वो बातें हम आपको क्रिपिंग करते हैं और वो बातें हम आपको सुनाएंगे अभी। तो मैं हूँ रश्मि, have Faraz, and then we also have a new guest today, Prashant. So, Prashant, would you like to introduce yourself? यस सो मेरा नाम प्रशांत है और मैं यहाँ फिनलैंड में 11 सालों से हूँ और मैंने पढ़ाई रश्मि और फराज के साथ ही की है। बट मेरा मेजर्स था विजुअल कम्युनिकेशन और उससे पहले मैंने पढ़ाई की थी इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में और फिर 1 साल तक मैंने नौकरी की थी दिल्ली में। उसके बाद फिर मैं एक साल तक मैंने कुछ तो किया था नौकरी कुछ के तो नाम किया पे। था। हाँ, दिल्ली में मैंने नौकरी की थी। उसके बाद फिर मैंने आल्टो यूनिवर्सिटी में मुझे मास्टर्स के लिए मैंने सिलेक्शन हो गया तो मैं फिर वहाँ यहाँ आ गया। सो काफी लंबा समय है डिजाइन। तो हिंदी पढ़ाई की थी, व्हाट दैट वाज द मेजर देयर और वो वाज इट तो लाइक? हाँ, वो भी था मेरा विजुअल कम्युनिकेशन में। और उसमें जो पढ़ाई मैंने की थी वो 1 साल हमारा था फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं कि आपको क्या चूज करना है, प्रोडक्ट डिजाइन चूज करना है या फिर विजुअल डिजाइन चूज करना है या फिर टेक्सटाइल, फैशन, फिल्म एंड वीडियो। काफी अलग अलग हैं। ऑप्शन। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और मैंने चूज किया था ग्राफिक डिजाइन एट दैट टाइम और थोड़ा टाइपोग्राफी हैवी था मेरा उस समय। फिर धीरे धीरे करके मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया यूएक्स की तरफ, क्योंकि इंडस्ट्री भी चेंज हो गई और नीड्स भी, मार्केट नीड्स भी चेंज हो गई। सो दैट्स वेरी हाँ Yeah. अब सॉरी, क्या? सॉरी कंटिन्यू। मैं कह रहा था, सॉरी मैं कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि प्रशांत का बैकग्राउंड जो है वो एक्चुअल विजुअल कम्युनिकेशन और ग्राफिक साइड का है। सो वेरी इंटरेस्टिंग उस तरफ से इस तरफ। खैर अब हम चले आगे बात करते हैं। जी रश्मि, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, बट ये कि when you were studying India में, did you study from a UX, like did you study from the perspective कि UX में घुसना है या as a you wanted to be a graphic designer या more visual designer? करियर क्या प्लान था उस टाइम? हाँ, उस समय आई थिंक करियर वाइज इंडस्ट्री लग था, बिकॉज इंडिया में यूएक्स का उतना लोगों को पता नहीं था। दिस इज बैक इन 2009 2008 के आसपास। सो मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स अगर जो विजुअल में काम कर रहे होते थे वो इधर वेबसाइट डिजाइन करेंगे, वेब डिजाइनर की तरफ जाते थे या फिर ब्रांडिंग की तरफ जाते थे। सो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था उस समय थोड़ी स्ट्रेटेजिक डिजाइन के साथ भी। सो मैंने सोचा कि मे बी थोड़ा ब्रांडिंग की तरफ जाऊंगा और थोड़ा उस एरिया को देखूंगा। बट मेरे बेसिक्स के लिए मैं टाइप कॉपी चूज किया था, बिकॉज मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी था कि लैंग्वेजेस और टाइपोग्राफी को भी सपोर्ट कर। Okay, so So speaking UX of was languages, probably not very do you know known. Finnish already? Well, I have the Finnish citizenship, so I could say that I speak enough Finnish, but native level is always much more difficult, and that also comes to my own work कि मैं प्रेफर करता हूँ इंग्लिश में और एट टाइम्स कस्टमर इंटरव्यूज हो गए या फिर विजिट्स हो गए वो फिन करनी होती है। सो देयर इज अ बिट ऑफ लिमिटेशन आप अलग अलग इंडस्ट्री, अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं। Yeah, so because that was my intention behind asking that question कि job के उसमें limitations क्या आती है with your language या with not knowing the local language and with not having the proficiency that they expect. So before that, maybe we'll start with what is your current role and then we can go to the language. Well, अभी my current role is a UX designer and अभी मैं रिटेल इंडस्ट्री में काम करता हूँ,
specifically employee experience, looking into tools and services that are meant for within the company. So it's meant for employees and staff who are working in the company. And the sector is retail tech. Okay. Go ahead. Faraz, your turn. I was about to ask, so for our audience, when you say retail, जब आप retail कहते हो तो उसमें can you just explain a little bit कि retail किस तरफ with some example, because retail can be आजकल के especially with this internet, retail can be many things. So yeah, I think retail specifically मेरी company के groceries, तो shops, groceries, daily goods, खाने की चीजें, और फिर clothing, makeup, और डेली और जो रेगुलरली जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं. सो एक होता है ग्रोसरीज गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स. सो दीज आर द मेन टू एरियाज फॉर रिटेल फॉर अस. In addition, there are other areas as well, but I'm not involved in those front for my company. Okay. So, but Prashant, so next question, how did you get here? ये retail तक पहुंचते क्या कुछ किया? Like after your masters, did you jump straight into UX? Like because from a visual, and we know, हमें पता है कि आपका क्या background है in terms के हम लोगों ने एक ही masters किया है ऊपर नीचे almost, लेकिन tell us for our audience कि आपने जो masters में से क्या किया, और when you came out तो किस किस्म के challenges थे to get into UX, or and then more importantly, क्या UX was always the ambition, or was the ambition, or is the ambition something else? So yes. Well, it's a very loaded question, but so आप unload कर दे. so जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने रश्मि और फराज आप दोनों के साथ पढ़ाई की है. So उस समय it was more towards this design thinking and user-centric design, user-centered design. और उसमें फिर मैंने इंटर्नशिप भी की थी, जो कि it was towards idea development, so innovation processes और strategic design की तरफ था. So from there onwards, for me, it was always to work in the area of maybe user centricity, user-centered design. So UX also falls in that area. So it was a natural shift eventually कि अगर आप डिजाइन में भी काम कर रहे हो, so then you would be working more and more towards user-centric work. As base, मेरा base is in UI design. So visual design, say it was natural shift to UI design, and that is where I started off, and then I kind of rose a little bit higher on the UX side. Higher, or I would say like maybe E-shape, जो हमारे मास्टर्स प्रोग्राम में काफी प्रमोट किया जाता है कि you should have one base of your own core, how do I say core, sorry, skills, competence. core skills, और उसके बाद फिर then you spread it out, gather additional skills which are beneficial when you're working with multidisciplinary teams. And so you feel that you have advanced from a UI designer to a UX designer. अब सच्चाई बताओगे क्या है? सही में ये सच्चाई तो ऐसा है रहता है कि you always, हाँ, so सच्चाई in the sense I would say कि ये काफी डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर में कि डिजाइन मैच्योरिटी कंपनी कितनी है. People would, I mean, in teams, people would put UX and UI in the same bucket. Magar UX or UI could be quite different things. Or at times when you say that you're a UX designer, people also expect that you're kind of a UI designer. So it all depends on how much maturity is there in the company. With maturity, I mean ki does the company allow designers to ask questions about user-centric work? How is it going to benefit users?
do they have a say in the company in making decisions regarding product, services, or anything else, or processes even? Or then there would be, do they spend enough time researching from a user-centric point of view, not from the business, how much profit does it generate? At the end of the day, it's always how much profit does the company get, but then a good service or a good user value also translates to good profit for the company in long run. So it अलग-अलग एंगल से देखने पे it brings in कि डिजाइन की कितनी मैच्योरिटी है कंपनी में. So walk us through maybe जो projects you do, yeah. Maybe let's start with के tools कौन से use करते हो in your day to day work as a UX designer or sometimes जैसे as a UI designer. कौन से tools you use? हाँ, I think for me, अभी मैं specifically Figma यूज करता हूँ UI डिजाइन के लिए. Actually, Figma भी काफी अच्छा टूल है अगर if you want to do some workshops, especially ideation workshops या feature development workshops छोटे level में. Or then if you want to do maybe more planning related workshops, so उसके लिए Miro is very good. And these two tools are accessible for everyone in the team, not only just me as a designer, but developers also and business people also, so they can also come see, comment, view on the designs or on the plan of the workshop. I think ये दोनों तो pretty much standard अभी almost industry का standard हो गया ना, Figma and Miro. Yes. Interesting. And then research के लिए how do? अभी भी लोग हैं जो नहीं यूज करते ये चीजें, बट ओके. मैंने कीनोट में वायरफ्रेम्स बनाए हैं एक टाइम में. I think for research, more or less, let's say depends on the tool. If it is qualitative research, अगर interviews वगैरह करनी है, so then it's pen and paper, mostly recording or then transcribing everything Word doc में and pulling out quotes and putting it in maybe Excel if it is a heavy research. मैंने Excel में काम नहीं किया है. I directly transfer my findings to either to Figma or to Miro. So there where most of the findings are from my side. But I know that जो researchers काम करते हैं हमारे में, UX researchers, they tend to use maybe Excel also for their research work. And then it becomes easier to find out and connect the dots कि कहाँ पे क्या finding थी and what the insight that now connects to. Interesting. Then I think next question would be, okay, how do you actually use these insights? जो भी either you do the research या फिर you gain insights from, अगर एक dedicated research team है company में तो उनसे research मिलता है. So how do you go from ये research किया हुआ, then एक suddenly एक project आता है, तो how do you start with a project जो UX का project है? I think theoretically and practically they are very different things. तो हम बात करना चाहते. Ideally it would be कि इसके बाद research already किया हुआ है, so then you match कि कौन सा research relates to this sort of business requirement, and then you evaluate कि what should be prioritized. Should the business requirement be modified, or then or then there needs to be a bit more research, or then we not prioritize the research that has been done and just continue with what has been asked for. But at times what happens is there is quite many gathered research that has been done. It's all scattered everywhere. कुछ और काफी सारे stakeholders टीम में होते हैं, so it can be also कि business side से भी कुछ research किए हुए हैं पहले,
or they have experience working with these services. So they have a certain point of view on these feature development or UX projects that might come in. And the end goal might be key. It's not necessarily has to be 100% user experience related, because it's an employee tool, and we are not going to lose user base if they don't use it, because they are required to कोई use ऑप्शन ही नहीं देंगे उनको option इसके ही अलावा. नहीं है. हाँ. Okay. So that also brings into factor. And then you have to do bit of discussion ki nahi, if they will not use it, then you cannot track things and you cannot find details ki wo kaise use karte hain, and it is not going to help in employee efficiency काम करने के लिए, which is the main overall arching goal for our team, to improve employee efficiency at work. सबका यही प्रॉब्लम है ना. वो I प्रॉब्लम think- डिफाइन करने में ही इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि वो प्रॉब्लम का कुछ और ही Okay. बन जाता है. हाँ, डेविल्स एडवोकेट देखें, जो डेवलपमेंट टीम्स हैं, लेट्स से, अब ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होती हैं ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन उनको भी तो होता है कि नहीं, व्हेन दे गेट द रिक्वायरमेंट्स, तो उनको भी तो यही सब कुछ करना है, अलाइन करना है अपने आप को, मैनेज करना है अपने टाइम को, रिसोर्स को, और डेवलप करना है. व्हाई आर दे एबल टू डू दिस बेटर देन द डिजाइन टीम्स? क्योंकि डिजाइन टीम्स छोटी भी होती है यूजुअली. देयर इज नॉट इनफ पीपल इन. और हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं इन गेटिंग इनटू द डिटेल्स एट द वेरी बिगिनिंग. आई थिंक वो थोड़ा एक ड्रॉबैक भी है डिजाइनर्स का, कि हमें बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होते हैं, इंस्टेड ऑफ कि जो है स्टार्ट रनिंग विद दैट एंड देन यू विल फाइंड योर वे अलोंग. बट I think okay, from the other side also, अगर हम run along भी करें, तो हमें let's say अगर नॉर्मल केस में 2 या 3 आइटरेशन चाहिए, तो उस केस में आपको 8-10 आइटरेशन चाहिए. तो फिर पेशेंस नहीं है दूसरी तरफ कि अच्छा इनको करने दो. वो भी मसला है. I think also maybe Rashmi ke point pe, if I could add something, ki as designers we are not usually subject matter experts in that area, so we have to ask questions, whereas जो business वाले लोग हैं वो have been working on this, and other stakeholders वो लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, so they have certain understanding to it. And we are maybe very good and very skilled in our ways of doing that, like realizing the design ki kaise wo business requirement design mein convert hoti hai, but for that we need to have a clarity ki kaise वो design करना. assume नहीं कर सकते सारी चीजें. हाँ, exactly. But then how do you handle these conversations? Like, do you have to put up a fight, या फिर right now you have figured out कि अगर मैं ये चीजें करूंगा तो मे बी ये डिस्कशंस मेरे लिए आसान हो जाएंगी? I think काफी सारे समय ऐसा भी होता है कि you call people for discussion on a particular topic. They tend to talk about everything else other than that particular topic, which is much bigger. So you have to have this sort of skill of managing conversation. कि आप कैसे you are managing the whole flow of this meeting, कि आपको कैसे interact करना है, what should be the action points at the end of the meeting, कि अगर कुछ clear नहीं है तो कौन क्या करने वाला है, कहाँ से information मिलेगी, और फिर अगर design की सारी चीजें अगर ठीक हैं तो इसको go ahead इसी meeting में करना है या फिर नहीं करना. So these things need to be clarified. मुझे कभी कभी ये भी लगता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और ये अक्सर हमें करना पड़ता है, बट मुझे ये भी लगता है कि समटाइम्स व्हेन आई एंटर अ न्यू, लेट्स से न्यू प्रोजेक्ट जिसका मुझे नहीं पता बिजनेस साइड का ज्यादा, उसमें आई एम सपोज टू लीड द कॉन्वर्सेशन, बट समटाइम्स आई फील लाइक दैट आई एम ओवरस्टेपिंग, बिकॉज ये लोग पहले भी तो काम कर रहे थे ना, कोई तो होगा जो ये लेकिन कोई नहीं कर रहा होता. अपेरेंटली वो टीम्स ऐसे ही चल रही होती हैं, एंड देन व्हेन यू स्टेप इन एंड यू स्टार्ट पुटिंग, अच्छा आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो मुझे लगता है कि डू आई इवन हैव दैट मैंडेट, स्पेशली जब आप एज ए स्टार्टिंग, लेट्स से आप यूएक्स डिजाइनर हो, आपको ये सब चीजें करनी है, लेकिन जब आप एक मीटिंग में घुसोगे और वहां पे 8-10 साल के लोग के एक्सपीरियंस के लोग बैठे हैं, और आप फिर सोचते हो बोलने से पहले कि यार ये मैं कर तो बोल तो दूं, लेकिन ये ना हो कि लोग
stupid question, asking stupid questions वाला वो. हाँ, exactly. Exactly. Usually, so I start with this thing कि just correct me if I'm wrong. Disclaimer. Because I don't know anything. You guys know most of the things and you're subject matter expert. एक चीज होती है तकिया कलाम. I don't know if you know what that means. तो मेरा तकिया कलाम है ऑफिस में आजकल. Correct me if I'm wrong. I think this is something जो कि मुझे फील होता है कि एज ए यूएक्स डिजाइनर या डिजाइनर इन जनरल आपको अगेन गोइंग बैक टू कि ये चीज पढ़ाई नहीं जाती. ठीक है, दिस ओनली कम्स विद एक्सपीरियंस. बट ये चीज कम से कम मेंशन जरूर होनी चाहिए कि आपको ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा एज यू गो इनटू दिस इंडस्ट्री. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपने मेंशन किया. वेरी वेरी वेल सेड. आई थिंक एक ऐसे भी चीज है कि एज हाउ you become more experienced, आपकी experience ज़्यादा बढ़ती है, then you also learn it in the field कि you have to be more people person कि आप कैसे लोगों से information लेते हो, फिर how can you utilize it for your project. So that is very important. Or there are people who want to do maybe very specifically into design, वो बस UI करना चाहते हैं, maybe वो design systems में काम करना चाहते हैं, and there is no harm in it, and they don't need to be a person in that front. They are very highly skilled and they are very good at it. So वो भी वो कर सकते हैं, and they will become senior. They will have seniority in that front also. But then if you want to have a different kind of role, then you also need to have like a especially you need strategy वाली side पे as you mentioned आप जाना चाहते हो तो फिर ये skill is inevitable. आपको ये करना ही करना है. Yeah. नहीं, और I think थोड़ा बहुत just to scope out कि project क्या है. I think just वो beginning phase के लिए भी you need this skill कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या questions पूछने, या you have to be shameless enough to ask stupid questions and have a thick skin के सामने वाला तुम्हें बेवकूफ समझेगा तो ठीक है, it's fine. But a lot of fearless, shameless, fearless, yes, but a positive spin on. You can call it shamelessly fearless. Okay. Yes, exactly. I think also maybe this is good to mention कि at times जब stakeholders से हम लोग बात कर रहे होते हैं या फिर user feedback भी आता है, तो most of the times what comes is they bring in solution कि उनको क्या चाहिए, कि यहाँ पे इस UI में बटन डाल दो and then we will be fine. But we have to then dig it up कि what is the root cause of it, what is the root problem behind it. And a lot of times, I mean previously it used to happen कि हाँ ऐसे उन लोगों ने user feedback आया हमारे कि UI में if you add this button to link it to another screen, so then their problem will be solved. So, but now this is one of maybe the core questions that I always ask. What is the root problem there you are trying to solve? What are the problems that they are facing, that why they have asked that this should be done it this way? So, इससे दो चीजें सॉल्व हो जाती हैं. एक तो हमें होता है कि हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है कि क्या प्रॉब्लम है, और दूसरी की प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. With further research or further questioning, analytics, or ये सब judge करके. So that is quite important things to ask before you start designing on the solution that has been asked for. And then this is something जो अभी मैं अपनी टीम के साथ काम कर रही हूँ, so I want to bring this up कि how, I mean, you know when you start a project from what we discussed now, कि maybe we find out ways how to start a project, but एक design का project खत्म कब होता है for you, and maybe for you and for your stakeholders, when does a design project end? Because right now I'm working on definition of done, which apparently is a very new concept यहाँ पे in the setup that I am currently, and I think it's a very obvious thing to have, but design के context में उसको कैसे लेके आए? Scrum के लिए तो it's used very obviously. I think हमारे team में it has been there this definition of done, but since maybe the design culture or in general the culture in my company is very different from your company, so हमारे में था that is very technical heavy कि what is the definition of done, and what is the definition of done and what should be the ways of working. So these two things, कि what should the ways of working for the entire team. So what happens is usually design is quite heavy in the beginning,
once the business requirement is given, कि थोड़ा discussions होता है कि क्या requirements को analyze करना है, फिर उससे फिर आप UI के proposals बनाओगे, then there would be go through up approval round, उसके बाद फिर details design, once the approval rounds are done, detail design, visual design, UI design में जाएगा. उसके बाद then you will discuss with the developers कि कैसे क्या limitations हैं, कैसे जाने वाले हैं. So I mean it goes quite back and forth between the three different disciplines. And the definition of done for a designer perhaps is there is always something or the other that is left out in, and you have to be involved in those things until the actual feature has been deployed in the product or the service. So there can be how I see it as it's probably the entire project that involves all three disciplines together. But yes, it really depends on the company context in our very tech. हाँ, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ डन बहुत अलग अलग हो सकती है फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड कंसीडरिंग की स्ट्रक्चर क्या है या कौन से फेज पे हो प्रोडक्ट की, so that will make a lot of difference for sure. But yeah, any other challenges जो आपकी इंडस्ट्री में specific to your industry that you are in right now or the country that you are in right now? I think in industry wise, because I'm working in employee experience side of things, so that is always bit of how do you show the value of employee experience at the end. And these are the areas which probably don't get quite a lot of funding because it is seen as a liability. It's not something that is going to generate revenue, but it is going to become cost for the company. So how do you make sure key if you're working in this area, then the value of employee experience is also taken into consideration. Or plus other thing, if you're working in Europe, in any other country that doesn't have English as a main language, then you have to have ways of working with your team members to ensure that you have as much information as possible to do your job properly. Yeah, so research की काम जितने भी होते हैं, field visits जितने भी होते हैं, I also do it, but then I have to ensure the person I'm going to interview has good level of English when they speak. हाँ, and also लोगों का comfort level भी देखना जरूरी है कि if they can actually communicate or express the needs in that language. Interesting. So any thoughts on like what would आप क्या message दोगे for people who are trying to get into, because now you see that this UX is becoming a very common terminology and everybody is putting UX next to their job titles. But I just saw yesterday a very renowned company, VP of user experience. And I was like, wow. And I read through the whole thing. There was nothing user experience about it. It was and then when I got to the end, I realized that it's a position for customer experience tech side. So the whole description was like completely off. And I was like, okay. Not that I was looking to apply for it anyway. So but question was, actually, Prashant, sorry. Question was, क्या message आप दोगे for people who are trying to get in? Some are coming from just studying and coming in, and some are trying to just steer their career into this UX area. Any thoughts? I think UX अभी it's such a buzzword कि सब लोग use करना चाहते हैं. At times teams में भी discussion जब हमारी होती है, so सब लोग बोलेंगे कि but what would the user actually want or what would the user actually use? ये भी काफी सारे लोगों के argument होते हैं, but that is only backed by data, and that's only backed by interviews or qualitative data or quantitative data, which is interviews or surveys or then analytics के through वो सारी back हो सकती है. So
I would say if someone is starting a career in UX at the moment, it's always good to keep your eyes open because UX as a field is also changing quite a lot. There are new things coming in. Explore as much as you can in the beginning because then you would know what you would like to do and what you would want to do. And then maybe specialize in a couple of things that would help you to grow as a designer. Yeah, I think that those are the basic things that I could say. I think entry level पे तो it's good if you have visual skills because reality industry की ये है कि everybody wants you to do wireframes. हर कोई चाहता है आप icons design करे, आप designs बनाए और button को yellow करे और ये सारी चीज़. So having that knowledge is a good thing, but yes, I think But then you have UX to also वो ask पड़ा question, why does the button need to be yellow? to be yellow, exact. And again, be fearlessly shameless. Just yeah, to ask those questions. So I think वो skill set और वो mindset के साथ आना बहुत जरूरी है. Otherwise, तो Rashmi, you are absolutely. I think the most critical thing is the mindset. अगर आप वो अपना उस पे stick कर सकते हैं और पहले आप वो develop कर सकते हैं वो mindset. I think for me, moving from different disciplines here and there, the only thing that I feel that I've managed to change, for instance, and that I feel works is the mindset. And mindset keeps you on that path. अगर आपका mindset उस तरह से नहीं है तो you will just फिर आप बह जाएंगे जिधर जा रही है टेक्नोलॉजी वाले और जिधर जा रहे हैं बस ठीक है जाने दो. So वो mindset is the strong mindset for this. Exactly. And I mean, end of the day, it is more about empathy. तो शुरू से empathy रखो कि ठीक है जैसे भी है stakeholders या if they are not at the same level as you in terms of understanding के user experience क्या है या user centricity क्या है तो empathize करो कि नहीं उनको पता है नहीं उन्होंने सीखा है and somewhere it is in your job responsibility कि तुम उनको बताओ कि वो क्या होता है और एटलीस्ट कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन कि उनको थोड़ा ब्रेन वॉशिंग कर सको इस डायरेक्शन में कि then they start thinking about these things. So maybe next time when they come to the meeting they are like prepared कि हाँ प्रशांत ये सवाल पूछेगा कि यूजर को क्यों चाहिए ये so they'll get at least have some answer prepared. Yes, it's true. Perfect. So thank you Prashant. I know कि ये थोड़ा सा हमने बस surface scratch किया with whatever you do in your daily work. So of course we will bring you back on this podcast again sometime. But lovely having you here. हम लोग तो हमारी तो बातें होती रहती है about what we do at work and not, but it's good कि at least we got to share some parts of it today. Yep. Yes, Lovely to have and I'm you. happy to be here anytime. फिर आपको हम दोबारा जहमत देंगे कभी. एकदम जरूर जहमत देंगे. I need to Google it कि वो क्या होता है. जहमत होता है जहमत होता है किसी को तंग करना काइंड ऑफ लाइक पोलाइटली तंग करना. हम आपको जहमत दे रहे हैं. Okay. So this is Rosa special Urdu lesson today. स्पेशल मतलब अब ये नहीं कहता है रश्मि आपको जहमत होगी मगर मुझे पानी का ग्लास दे दीजिए प्लीज. हाँ मुझे बहुत जहमत होगी. ओके मेरे सामने टॉपिक उतनी दूर से भेजने में तो जहमत ऑब्वियसली होगी. All right. Perfect. So thank you for being here again. And सबसे मिलते हैं अगली बार. Goodbye. Subscribe to the channel. Bye. Right. Yes. Yes. Okay.